Hello everyone, this is 𝐲𝐴𝐭𝐡 for the Kiran Academy. So guys, in the previous lecture, इससे पहले हमने जो lectures किए थे, हम लोगों ने वहाँ पे VPC और कुछ EC2 के topics को discuss किया था. Mainly हमने एक topic को discuss किया था एक पिछले live lecture में, and the topic was EBS volume. So EBS volume की कुछ limitations थी, okay? इन limitations को address करने के लिए Amazon की एक सर्विस है, इट इज नोन एज EFS. ओके, हम इसे कहते हैं EFS शेयर. सो गाइज, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव EFS शेयर है. हम लोग ये समझेंगे इस लेक्चर में कि EBS वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या था और EBS वॉल्यूम के लिमिटेशंस क्या थे. अगर आप EBS वॉल्यूम को अच्छे से समझ सकते हो तो आप EFS शेयर को अच्छे से समझ पाओगे. ओके, तो EBS वॉल्यूम, अगर हम EBS वॉल्यूम की ही बात करें तो EBS वॉल्यूम बेसिकली वर्चुअल हार्ड डिस्क है. वर्चुअल हार्ड डिस्क. तो EBS वॉल्यूम मतलब कि एक वर्चुअल हार्ड डिस्क एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज है. एक हार्ड डिस्क जो होती है, ब्लॉक स्टोरेज जो होता है, वो एक मशीन पे माउंट होता है और उसी मशीन पे वो रीड और राइट हो सकता है. पर अगर आपको एक EBS वॉल्यूम या अगर आपके पास एक वर्चुअल हार्ड डिस्क है या फिजिकल हार्ड डिस्क है जिसे आप मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर साइमल्टेनियसली माउंट करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो, तो विल नॉट बी एबल टू डू दैट. क्योंकि जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है ना, ब्लॉक लेवल स्टोरेज एक ही डिवाइस पे एट अ टाइम माउंट होता है. तो EBS जो है, इसमें B जो है, इन EBS ये जो B है, B stands for block, and block level technology can only be mounted on one machine at a time, one virtual machine or one physical machine at a time. तो EBS का प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास 4 या 5 वर्चुअल मशीन्स है तो आपको उनके हर एक वर्चुअल मशीन के लिए एक अलग EBS वॉल्यूम बनाना होगा. यू कैनॉट डू दिस. लाइक अगर ये आपकी मल्टीपल मशीन्स है तो जस्ट इमेजिन करिए, ये आपका एक वर्चुअल मशीन है, इंस्टेंस 1 है ये. दिस इज इंस्टेंस 1. इमेजिन दिस इज इंस्टेंस 2. इंस्टेंस 2. हियर वी हैव इंस्टेंस 3. Okay, and in here you have this EBS volume. Okay, that is your EBS volume. So remember, if this EBS volume is attached over here, you cannot do is you cannot attach it here or here. You cannot do that. तो EBS वॉल्यूम एक ही इंस्टेंस को अटैच होगा, उसी इंस्टेंस को आप उसको अटैच करोगे और वहीं पे यूज करोगे. पर अगर आपको एक EBS वॉल्यूम को मल्टीपल इंस्टेंस पे अटैच करना है तो नहीं कर सकते. इसके लिए Amazon के पास एक अलग ऑप्शन है. What Amazon offers us is something called EFS Share. तो Amazon offers us something called EFS Share. And this EFS share can be mounted onto simultaneous instance at the same time. Okay. तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक शेयर्ड फोल्डर बना रहे हैं. तो विथ EFS what we are doing is we are creating a shared folder, and this shared folder can be mapped to multiple instances simultaneously. Okay, so the point is very simple. If you have 10 instances and you need like a common shared folder, so EFS is that option for you. Now, the best part about EFS is it is fully managed by AWS. So EFS is fully managed by AWS. Fully managed by Amazon Web Service. Okay. तो इसको अगर मैं एकदम लो लेवल पे समझाऊँ आपको, तो इमेजिन करो आपको एक शेयर फोल्डर बनाना है. तो पहले एक सर्वर लेना होता है आपको. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ सर्वर. इस सर्वर के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है. उस सर्वर के ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, नेटवर्किंग के, सिक्योरिटी के, ठीक है, बैकअप के, एनक्रिप्शन के, सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको करने होंगे. और फिर जाके एक फोल्डर आप बनाओगे और उस फोल्डर को आप शेयर करोगे. तो बेसिकली Amazon ने सब कुछ करके रखा है. आपको कोई सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई
हार्ड डिस्क को पार्टीशन फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, कोई एनक्रिप्शन, कोई नेटवर्किंग, कोई भी चेंजेस करने की, कॉन्फ़िगरेशंस करने की आपको जरूरत नहीं है। Amazon आपको आपके रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी जोन में, आपके वीपीसी के अंदर जिन सबनेट्स पे आपको चाहिए, वहां पे ईएफएस शेयर आपको प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो Amazon को आपको ये बताना है कि इस रीजन में, इस वीपीसी में मेरे को एक ईएफएस शेयर चाहिए। Amazon ये ईएफएस शेयर बना देता है, और इस ईएफएस शेयर का जो डिफॉल्ट साइज है वो है 8 एक्साबाइट। ओके, तो इफ यू अंडरस्टैंड द कैपेसिटीज, जैसा स्टोरेज डेटा की कैपेसिटी होती है, जैसा फॉर एग्जांपल डेटा को अगर आप काउंट करना चाहते हो एट द लोएस्ट लेवल, आप डेटा को काउंट करोगे समथिंग लाइक, मे बी लाइक बिट में काउंट करते हैं हम लोग। ओके, तो 8 बिट जो होता है ना, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, एंड देन 1024 बाइट गिव्स यू 1 किलोबाइट। 1024 kilobyte should give you 1 megabyte, and so on. Like 1024 megabyte will gives you 1 gigabyte. 1024 gigabyte should give you 1 terabyte, and then 1024 terabyte should give you 1 petabyte, and 1024 petabyte should give you 1 exabyte. Clear? So guys, what you are getting over here is 8 exabytes of capacity. एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर ये करेक्ट है क्या, जस्ट एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ उसको। ओके, तो केबी, एमबी, जीबी, एंड इफ आई जस्ट गो ऑन सीइंग द चार्ट नाउ, तो देखिए यहाँ पे ना गीक फॉर गीक्स, तो इफ यू गो ऑन दिस साइट, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। सो हियर वी कैन सी द sizes. So you have gigabyte, then terabyte, then petabyte, and then exabyte. The same is over here. गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट है, और आपको यहाँ पे 8 एक्साबाइट की कैपेसिटी मिल रही है ईएफएस शेयर में। ठीक है, सो गाइस दिस इज अ वेरी मैसिव कैपेसिटी। ओके, बट रिमेंबर, you are not built for 8 exabyte, you will be only built for the amount of data that you will use. तो सोचो, आप 8 एक्साबाइट के लिए आपकी बिलिंग नहीं होने वाली है। अगर आप 4 GB डेटा यहाँ पे स्टोर करते हो तो 4 GB के ही पैसे देने आपको। अगर आपने 100 GB डेटा स्टोर किया है तो 100 GB के पैसे देने। तो डिपेंड करता है कि आपने डेटा कितना स्टोर किया है यहाँ पे, और एवरी एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ बिलिंग की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है, एंड देन यू गेट द बिल। ओके, सो गाइस दिस इज ईएफएस शेयर। अभी इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। ओके, आई क्विकली लॉन्च 2 EC2 इंस्टेंसेस, 2 इंस्टेंस में लॉन्च करूंगा। तो here under AWS I'll go on to EC2. Okay, so here we are on to EC2, and under EC2 we'll be creating 2 virtual machines. ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ इंस्टेंसेस का ऑप्शन है, एंड आई एम यूजिंग कैलिफोर्निया रीजन, यू कैन चूज एनी रीजन ऑफ योर चॉइस, जो भी रीजन चाहिए आप चूज कर सकते हो। तो इन कैलिफोर्निया आई एम गोइंग टू लॉन्च एन इंस्टेंस, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 इंस्टेंसेस। तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग टू टेल इट लाइक आई नीड 2 इंस्टेंसेस, 2 इंस्टेंसेस चाहिए। ओके, ये इंस्टेंस Amazon लिनक्स भी होंगे तो चलेगा, उबंटू भी होंगे तो चलेगा, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लिनक्स विल डू, and the size is going to be T2 micro, and key pair I'm going to choose a key pair. So I've chosen a key pair, and then I'll edit, and I'm going to choose a preferred subnet. So I'm going to choose this subnet with availability zone 1A. Okay, so that is my subnet. So everything else looks good. बाकी कोई चीज को change नहीं करना है. The only thing is I want to create 2 virtual machines in a default VPC and in a given subnet. Okay, launch instances. So हमने 2 virtual machines यहाँ पे बना लिए. Okay, we have 2 virtual machines created over here. We'll just see all our instances. So I'll just call them, like I'll call it instance 1, and this is going to be our instance 2. तो मेरे पास 2 इंस्टेंस है यहाँ पे, एक इंस्टेंस 1 है और एक इंस्टेंस 2 है। ओके, इंस्टेंस 1 को आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, कॉपी द पब्लिक IP. Okay, and since it is in running state, in my terminal I'll just type is ssh -i. Okay,
अंडर वन ड्राइव आई हैव डायरेक्टरी कॉल्ड वन ड्राइव, उसमें क्लास नाम का फोल्डर है और इसमें कीज वाला फोल्डर है, ठीक है, इन वेयर आई हैव aws.pem file. And to connect to the instance, I'm going to use EC2-user as my username, paste my public IP, enter. Yes. So guys, we are connected to this first machine. तो पहले इंस्टेंस को हमने कनेक्ट कर लिया, okay? So once you are connected into the first instance, now you can open connection to another instance as well. So here we have instance 2, and instance 2 has this public IP 1357.47.102. I copied the public IP, okay? Just a second. I'll just do SSH-I one drive class keys and AWS cert. Okay. .pem file EC2-user and paste my public IP. Okay, enter. Yes. So guys, we are connected to the second machine as well. अभी to differentiate both the machines, ये देखिए पहले मशीन का जो प्राइवेट आईपी है that is ending on 115, तो इसके prompt पे 115 दिख रहा है. This is my first machine. The second machine is 166. Prompt पे 166 दिख रहा है. That is my second virtual machine. Okay. So this is how you can differentiate both the machines. Okay. अभी देखिए हमें EFS volume create करना है. Actually EFS share होता है. I'm sorry, it is not volume. It is called EFS share. I want to create an EFS share. Okay. If you want to create the share, first of all, it is required that you create a security group for the EFS share. So what I'm going to do is I'm going to go into networking and security into this category. Under security group, here we can create a security group of our choice. Okay. So we can hit the button create security group. Okay. And I'll call this like EFS. Okay. Underscore group GRP1. Okay. That is the name of my group, security group. Now in this security group, in order to mount this share directory, what you will be using is NFS form. Okay. So I'm going to allow NFS traffic. So I've given a description, allow NFS traffic, okay, to the security group. It will be in the default VPC. Okay. Add a rule, and here under the rule, I'm going to choose, I want to allow NFS. Okay. So NFS uses TCP port number 2049. And this I want to exclude for everybody. Okay. So guys, remember, ये जो security group है, मैं EFS share के लिए बना रहा हूँ. I'm creating this for EFS share. Okay. This security group will allow NFS communication. Okay. For anyone. And then I'll just quickly create the security group. So guys, once we are done with the security group creation process, the next step is creating the EFS share. Okay. We can go here and search for EFS. So you'll find EFS option available. You can open it in a new tab. So I have opened this in a new tab over here. So remember, your EFS share has to be in the same region, in the same VPC as your instances are. Okay. If your instance is in different VPC and if your EFS share is in a different VPC, so you have to do inter-VPC peering connection so that your EFS share on another VPC can be mounted onto instances of another VPC. So if you have two different VPCs, आपके कुछ instance VPC 1 में है जो EFS share जो VPC 2 में बना हुआ है, ठीक है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दोनों VPC के बीच peering connection करना होगा. ओके. तो गाइज यहाँ पे ध्यान में रखिए, VPC सेम होगा तो चीजें आसान होंगी, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू से लेट्स क्रिएट द फाइल सिस्टम. ओके. EFS जो शेयर है फाइल सिस्टम में वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, this form is a very like small version of the form. ठीक है. You can just give a name and which VPC and then create it. पर लेकिन अगर आपको और भी कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन करना है, तो आप कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे. ओके. Upon clicking the customize button, here you can configure settings. जैसा इस share का नाम देना है. I'll call it like share 1. You can call it anything. I called it share 1.
अभी जो आपका जो ईएफएस शेयर है, ये रीजनल अवेलेबिलिटी होंगी इसकी या वन जोन अवेलेबिलिटी होंगी, इनका फर्क समझाता हूं मैं आपको। ओके। अभी देखिए, रीजनल अवेलेबिलिटी ऑफर्स हायर लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बाय स्टोरिंग file system data across multiple availability zones within an AWS region. So what region does is, whatever you are going to write the data in the availability zone A, it is also going to store that same data in availability zone B as well. So imagine, like, whatever you are going to put into EFS share 1, okay, it will go over here in the first availability zone, as well as it will be replicated to one more availability zone. You'll have a mirroring of this. So basically this can add up to your cost. ये महंगा हो सकता है, क्योंकि अगर if you are storing, like, let's say 50 GB data over here, 50 GB data over here, so you're again storing 50 GB data over here. Yeah, you'll have to pay double the cost. Plus you have to pay the cost of replication from one availability zone to another. जो नेटवर्क फीस होंगी वो भी पे करनी होंगी आपको. So if you're having critical data, if you are having data that is really very important to you, the data is significantly important to you, तो तब जाके आप रीजनल शेयर यूज करना. ओके. पर अगर आपके पास नॉमिनल सा डेटा है और वो डेटा का इतना ज्यादा हाई अवेलेबिलिटी भी आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप एक अवेलेबिलिटी जोन में ही डेटा स्टोर करो, दूसरे में मत स्टोर करो, इससे आपका कॉस्ट कम होगा. ओके. पर ये वाला ऑप्शन है वन जोन ऑप्शन. तो प्रोवाइड्स कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी टू डेटा विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन विद इन अ AWS रीजन. मतलब अगर ये अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हुआ तो आपका डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे. वेर एज इन द प्रीवियस इंस्टेंस, जब हमारा डेटा अवेलेबिलिटी जोन बी में भी बैकअप था, एक अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हुआ तब भी आपका डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से रीड हो सकता था. यहाँ पे नहीं होगा वो. ठीक है. अच्छा, वहां पे आप डबल स्टोरेज यूज कर रहे थे, आपका कॉस्ट बढ़ रहा था. यहाँ पे आप स्टोरेज ज्यादा यूज कर ही नहीं रहे हो, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं लगने वाला है. ओके, क्लियर? ठीक है. So I'll just quickly clear all these things. Okay. The next thing is automatic backup. If you don't want backup for now, like I'm not going to store any critical data into my EFS share. So I'm going to uncheck this option of backup. Okay. So I'm going to just uncheck this option of backup. Okay. Now, remember the storage that we use in cloud, it is not like our traditional storage. Okay. It is completely different. तो अनलाइक अ ट्रेडिशनल स्टोरेज जहां पे हम लोग हार्ड डिस्क एक बार खरीदते हैं, अभी सोचिए आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है, आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क है. वो हार्ड डिस्क जब आपने परचेज किया, जब आपने वो लैपटॉप परचेज किया, उसके साथ हार्ड डिस्क भी आपको मिली है. अब इस हार्ड डिस्क के ऊपर इमेजिन करिए 500 GB के तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो. अभी 500 GB डेटा जब आप स्टोर कर रहे हो इस हार्ड डिस्क के ऊपर, ओके, 500 GB डेटा जब आप इसके ऊपर स्टोर करते हो, तो एवरी मंथ यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू एनीवन. ठीक है. तो जो आपने डेटा स्टोर किया है, ठीक है, वो वन टाइम कॉस्ट आपने पे किया उसका, हार्ड डिस्क परचेस करने के वक्त. अभी उस हार्ड डिस्क के ऊपर 500 GB डेटा स्टोर करो या 10 GB डेटा स्टोर करो, या पूरा हार्ड डिस्क ब्लैंक रहे आपका, या पूरा हार्ड डिस्क ऑक्यूपायर है, एवरी मंथ यू डोंट हैव टू पे द कॉस्ट. सो ट्रेडिशनल जो स्टोरेज है हमारा, वो हम लोग अपफ्रंट परचेस कर लेते हैं हार्डवेयर. वो जो हार्ड डिस्क होता है वो आप खरीद लेते हो. ट्रेडिशनल तरीका जो है स्टोरेज को यूज करने का, उसमें हार्ड डिस्क आपने खरीद लिया. अभी आप वो हार्ड डिस्क को यूज करो या मत करो, यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट टू एनीवन. ओके. एवरी मंथ आपको कॉस्ट नहीं पे करना है. लेकिन क्लाउड स्टोरेज अलग होता है. क्लाउड में जैसे कि अभी ईएफएस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टोरेज कंप्लीटली अलग है. अभी आप जैसे यहाँ पे डेटा स्टोर करने वाले हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू पे द कॉस्ट, depending on how much data you have added, how much data was there earlier, and what kind of properties does your data possess. आपका डेटा स्टैंडर्ड डेटा है, आपका डेटा वन जोन डेटा है. डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज दैट वी कॉन्फ़िगर ऑन आवर डेटा, अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है. ओके. तो रिमेंबर, इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन है यहाँ पे. तो सब में पहला ऑप्शन है, व्हाट यू कैन डू टू लिमिट द कॉस्ट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेटा कैन बी स्टोर्ड इनटू मल्टीपल ऑप्शंस. डेटा को स्टोर करने के जो ऑप्शन है पहले वो समझा देता हूँ. सब में पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड. दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक्चुअली आई विल नॉट राइट इट ओवर हियर, वन सेकंड, आई विल जस्ट क्विकली इरेज दिस फ्रॉम हियर एंड we'll write it onto a drawing book. Okay, over here. So
To store your data, you have a few options available. जैसे कि standard option है. So we have this option of standard option. Then we have standard, infrequent access. Okay. So we have the standard option, we have standard infrequent option, and we have archive. Okay. अभी standard का concept क्या है? Standard is basically when you have data on a very high performance storage. Okay. तो अगर आपका high performance storage है और आपको frequently data को access करना है, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज करोगे. ओके. तो इमेजिन करिए आप एक फाइल है ना आपके स्टोरेज पे सेव करते हो. तो इनिशियली जब फाइल एक सेव होती है, मे बी लाइक आफ्टर अ कपल ऑफ डेज यू विल ओपन द फाइल, और मे बी यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल इन द नेक्स्ट आवर. तो अगर आप है ना इन अ मंथ एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स अगर आप फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड फाइल, दैट इज फ्रीक्वेंट एक्सेस. तो फ्रीक्वेंट एक्सेस क्या होता है? हर महीने कम से कम फाइल को 1 या 2 टाइम आप ओपन कर रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंट एक्सेस है. महीने में एक बार भी किया तो फ्रीक्वेंट एक्सेस हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास ऐसी फाइल है, ठीक है, ऐसी फाइल है जिसको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हो, 6 6 महीने तक का वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो इसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कहा जाता है. तो दैट इज देन नोन एज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. क्लियर? So infrequent access is somewhere where you have your data and you are not going to open that data at least once a month. आप open नहीं करने वाले हो. आपका data, maybe you'll call for the data every like 6 8 months में कभी तो भी आप call करने वाले हो, ठीक है. So that is standard infrequent access. This one will be cheaper compared to standard. So standard will be expensive because there as soon as you call for the data will be available. In standard infrequent access, there will be some sort of latency. Okay. But anyway, here you are going to store infrequent access data, the data that you'll not use on regular basis. And finally, archive. Okay. The data is critical to you, but maybe like you want the data if the primary copy of the data fails, or maybe like if like if you may need the data after 4 years or 5 years, then you can archive it. Okay. So archive is something like backup. Okay. लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. Okay. So basically, like these are three different options according to which you can store your data. So initially, when you put the data into your EFS share, so basically when you put your data into EFS share, okay, it is going to transition into infrequent access if you don't access your file for 30 days. Okay. तो अगर 30 दिन तक का अगर आपने फाइल को एक बार भी नहीं ओपन किया, okay, so the last time when you have opened the file, it has been more than 30 days, your file becomes infrequent access storage पे चले जाता है आपका फाइल. ठीक है. तो here there will be a storage. Okay, here they will be having a storage over here. Let's imagine. तो initially ये रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का ये आपका स्टैंडर्ड स्टोरेज है, स्टैंडर्ड. एंड जस्ट इमेजिन दैट इज योर फाइल. ओके, दैट इज योर फाइल, that is your file. So once the file got stored onto the standard storage, it has been almost a month, या एक महीना हो के जा रहा है, and this file was not opened by any of your users for 1 month. So then the file will be transferred to standard infrequent access storage. अगर 30 डेज का जो टाइम है, अगर 30 डेज तक का ये फाइल को आपने एक्सेस ही नहीं किया, तो ये फाइल को हम क्या करते हैं, द फाइल गेट्स मूव्ड इनटू स्टैंडर्ड infrequent access. ये चीपर होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड. So standard storage is for frequently accessed data. The files that you are opening on regular basis stays here, and the file that you are opening after a very long period of time, like 2 months or 3 months, तक आप open कर रहे हो, तो that is standard infrequent according to this definition. And finally, there is this last level of storage, and that is archive. Okay, that is archive. अब imagine करिए this file was not accessed by you for 90 days. From the time it was uploaded. So this file will finally be transferred. Just a second. This file then becomes
ट्रांसफर टू आर्काइव। ठीक। सो रिमेंबर, अगर आपकी फाइल अपलोड होती है 30 दिन तक आप वो फाइल को ओपन ही नहीं करते हो, तो वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में चले जाती है, जो थोड़ा सा चीपर होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड। और अगर इस फाइल को 90 डेज हो गया है लास्ट टाइम जब वो ओपन हुआ था, तो अभी आर्काइव में चला जाएगा फाइल। ओके, ठीक है। लेकिन किसी भी वक्त, कभी भी अगर आप फाइल को ओपन करते हो, वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में है या आर्काइव में, जैसे आप ओपन करोगे अपनी फाइल को, ये फाइल आपका ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा टू स्टैंडर्ड बैक अगेन, वापस से यहाँ पे जंप करेगा जब आप ओपन करोगे आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, या फिर आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, 40-45 डेज के बाद आप ओपन करते हो, तो भले ही वो फाइल स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या आर्काइव में कहीं पे भी स्टोर हो, वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड को मूव हो जाएंगे। ओके, that is what is life cycle management. So this way your cost can be optimized. Okay, ठीक है। So guys, ये डिफॉल्ट पॉलिसी रहने देते हैं हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एनक्रिप्ट, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, तो आप इंक्रिप्शन कर सकते हो। ओके, तो ऑफलाइन एक्सेस, ऑफलाइन अटैक के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंक्रिप्शन आपको। आई एम गोइंग टू अनचेक दिस। ओके, अभी थ्रूपुट मोड, तो परफॉर्मेंस कैसा होगा आपके स्टोरेज का? So basically, enhanced mode provides more flexible and higher throughput levels for workload with range of performance requirement. इसमें दो ऑप्शन है, एक इलास्टिक है, एक प्रोविजन है। इलास्टिक परफॉर्मेंस मतलब इलास्टिक जो होता है ना, इस केस में ऐसा होता है कि एक बेसलाइन परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। इफ यू वांट मोर आईऑप्स, इफ यू वांट मोर आईऑप्स देन दैट, इफ इट इज अवेलेबल, आपको मिल जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना होता है इलास्टिक। प्रोविजन में आप जितना डिमांड करोगे आपको उतना मिलेगा। प्रोविजन परफॉर्मेंस में आप वंस यू सिलेक्ट दिस, यू कैन मेंशन कि आपका परफॉर्मेंस थ्रूपुट कितना होगा, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। बर्स्टिंग ऑप्शन जो है, बर्स्टिंग ऑप्शन, दिस इज अ चीपर ऑप्शन, तो इट प्रोवाइड्स थ्रूपुट दैट स्केल्स विद द अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर वर्कलोड। द मोर स्टोरेज, द मोर कैपेसिटी यू आर यूजिंग, द मोर परफॉर्मेंस यू विल बी गेटिंग। ओके, ठीक है। तो आर्काइवल में एनीवे थ्रूपुट मोड मस्ट बी इलास्टिक, हम लोग एनहांस में जाके इलास्टिक ऑप्शन ही एनीवे चूज करने वाले। ओके, तो परफॉर्मेंस यू कैन चूज फ्रॉम योर, यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू चूज योर परफॉर्मेंस। ओके, एडिशनल सेटिंग्स में अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी तो हम लोग एनहांस्ड ऑप्शन यूज कर रहे हैं विद इलास्टिक सब ऑप्शन अंडर इट, तो इसका मतलब हम लोग जनरल पर्पज ही यूज कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू यूज एनी अदर ऑप्शन। ओके, एनीवे विल गो नेक्स्ट स्टेप। Here we can set up our networking parameters. Okay, I'm going to choose availability zone 1A, क्योंकि मेरे दोनों इंस्टेंस availability zone A में ही बने हुए हैं। If I just show you over here on my instances, so both of my instance 1 and instance 2, they both are created in US West 1A, and in where we are going to put this thing. So US West 1C को I'm removing this, and security group भी मैं clean करके I'm going to only select the security group of EFS group 1 that we have created, in which we have excluded the NFS port. ठीक है। Anyway, next. So if you want a policy, for example, you want to prevent root access by default, you can check this radio button. Automatically, the policy will pop up in front of you. If you want, you can make changes into this. Anyway, I'm not going to make any changes here, and all things look good for me until here. We'll click next, and if I scroll down, ठीक है, all the review things are good to me, सारे configuration items proper है। अगर if there is no changes required, you can finally click create button. So guys, EFS share is being created. In this entire case, you are not asked for कि आपके server का size कितना होगा, what is going to be the capacity of your EBS volume या storage का capacity कितना होगा. It's not asking anything of that type. It is just telling you what is the behavior of your EFS share that you are creating. Okay. So for now, at this point in time, हमारा EFS share बन चुका है. Okay, it is available. But if I take you to file system ID and if I take you to network option over here, अगर network option पे लेकर जाऊं मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे अभी भी माउंट टारगेट स्टेट जो है क्रिएटिंग स्टेज में. ओके, तो इट विल बी क्रिएटेड इन सम टाइम. इफ आई डू कंट्रोल F5, even if I do control F5 a couple of times, still it is saying it is getting created. So you'll have to wait a minute or two. ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये, थोड़ा ही टाइम आपको वेट करना होगा. Meanwhile, what we can do is we can go over here, okay, and we can do is in the first instance, पहले वो instance में जाकर मैं df-h में रन करूँ, तो आप सारे डायरेक्टरीज देख सकते हो और वो कहाँ पे माउंटेड है, सारे शेयर और माउंट पॉइंट देख सकते हो. तो आप यहाँ देख रहे हो कि
ये सारे आपके माउंट पॉइंट्स हैं। यहाँ 8 एक्साबाइट का कोई भी नहीं है, 8 GB का आपका एक वॉल्यूम है, 8 GB का एक पार्टीशन है, आई एम सॉरी, XVDA1 इज द पार्टीशन, लेकिन 8 एक्साबाइट का ई वाला ऑप्शन नहीं है। ओके, तो सब में पहले हमें एक फोल्डर बनाना है। तो sudo I'm sorry, to create a folder we have to use mkdir, and I'm going to create a folder in my root partition. I'll call it like data1. Okay, and then hit enter. So guys, we've created a folder, and in order to mount our EFS volume on this folder, what we have to do is we have to copy this EFS public IP. Okay, we have to copy this. After copying this, we can go over here and sudo mount -t is NFS for। अभी किस चीज को माउंट करना है, आपका पब्लिक आईपी, वो जो आईपी था वो टाइप करके कोलन रूट को मुझे माउंट करना है ऑन माय रूट data1। ओके, आई थिंक data1, दैट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी। तो NFS4 टाइप का माउंटिंग है। किस चीज को माउंट करना है, ये नेटवर्क के पाथ को माउंट करना है मुझे data1 के ऊपर। ओके, एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कंट्रोल F5 करूँ यहाँ पे 1-2 बार, ठीक है, तो ये जो क्रिएटिंग फेज था ये आई थिंक लाइक अवेलेबल स्टेट आ जाना चाहिए इसमें। तो ये अवेलेबल स्टेट है। और फाइनली लाइक इफ आई जस्ट हिट एंटर, सो गाइज हमारा माउंट हो जाना चाहिए, वॉल्यूम शुड गेट माउंटेड ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर df-h करते हैं हम यहाँ पे वन मोर टाइम, तो ये वी कैन सी लाइक 8 एक्साबाइट का एक वॉल्यूम हमने माउंट किया data1 वाले डायरेक्टरी पे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर मैं df-h करूँ, df स्पेस -h, तो यहाँ पे आपके पास 8 एक्साबाइट का कुछ भी नहीं है। फाइन, sudo mkdir और शेयर डायरेक्टरी, इस तरीके का मैंने नाम दे दिया। इन द रूट पार्टीशन आई एम गोइंग टू हैव दिस। ओके, रूट पार्टीशन आई हैव दैट शेयर डायरेक्टरी क्रिएटेड, एंड देन sudo mount -t is NFS for। what I want to mount is this path root directory onto /share directory। okay, this is the path where I want to mount this share directory। okay, and if I do df-h one more time, so it should get mounted over here। आप देख रहे हो 8 एक्साबाइट का जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे माउंटेड है। If I do cd and go to share directory in the root partition, I'm sorry, in the root partition share directory में जाओ, and if I do ls, as of now ls का आउटपुट में कुछ नहीं दिख रहा है। okay, पर on the adjacent side, if I go to this directory data1 cd space root में data1 ls करूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं nano करूँ, sudo nano, and if I create this f1.txt, okay, so this file gets created, and I'll mention like this is, okay, this is instance 1, control S, control X to exit out of here। if I go to the adjacent side and if I do ls here, तो आपको file1.txt दिख रहा है। okay, अगर मैं cat करूँ f1.txt पे, here you can see this is instance 1, इसका content दिख रहा है। you can in fact like do sudo nano f1.txt। okay, and we can add one more line like this is edited on instance 2। okay, and if I go to first instance and if I check over here cat file1.txt, and here you can see this is edited on instance 2। so guys, we have a common share। what we exactly tried to achieve over here is this, we had this common availability zone। okay, so guys, we had this common availability zone with us। okay, so this was availability zone A। in the availability zone, in this availability zone, we had 2 instances। okay, so we created this first instance, instance 1, and we created one more instance, instance 2। they both are mounted upon this common share। okay, so that is my EFS share, and this EFS share is mounted on instance 1 as well as instance 2। okay, तो ये EFS share है ना, दोनों इंस्टेंस के ऊपर माउंटेड है, और दोनों भी इंस्टेंसेस इस शेयर के अंदर रीड और राइट कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक लाइक द एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू।
It is very simple. The concept of EFS sharing is very simple, very easy. अगर आप EBS को समझ चुके हो, अगर आपने EBS के ऊपर प्रैक्टिकल्स किए, EFS का प्रैक्टिकल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके. EBS का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके 4 या 5 या 10 इंस्टेंसेस है आपके पास, और वो सारे इंस्टेंसेस सेम डेटा पे काम करने वाले, दे ऑल रिक्वायर द सेम डेटा. So the problem is this: the hard disk that we use can be only connected to one instance at a time. You cannot connect it to 2, 3 or 4 instances at the same time. EFS कर सकते हो. EFS is a shared folder. It's not a hard disk. And the best part about this shared folder, it is that it is maintained completely, thoroughly by AWS. हमें कुछ करना ही नहीं है. हमें बस इसे create करना है, इसकी properties set करनी है. ठीक है. Properties में भी हमें डेटा की properties set करनी है कि अगर कोई फाइल जब आप अपलोड करते हो, एक नया फाइल आप EFS में क्रिएट करते हो, तो ये फाइल बनता है स्टैंडर्ड फाइल इनिशियली. अगर कुछ दिनों तक आप इस फाइल को एक्सेस नहीं करते हो, तो ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस बन जाता है. और फाइनली इसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने काफी टाइम तक यूज नहीं किया, ये आर्काइव हो जाता है. लेकिन ये इनफ्रीक्वेंट या आर्काइव स्टेज में जब भी है, आप जब इसे ओपन करोगे इस फाइल को, ये इमिडिएटली स्टैंडर्ड बनेगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो गाइज ये कॉन्सेप्ट है पूरे EFS के. आई होप ये पूरा जो प्रैक्टिकल है EFS का, ये बहुत इजीली समझ में आपको. सिर्फ इतना ध्यान में रखना, EFS का एक ही कमांड है, जो माउंट का कमांड हम यूज करते हैं, जो टेम्पररी माउंटिंग करते हैं हम लोग. बस मैंने टेम्पररी माउंटिंग किया है लिनक्स सिस्टम्स के ऊपर. आप में से जो लिनक्स के एक्सपर्ट्स है, जिन्हें लिनक्स के बारे में अच्छे से पता है, आप ये कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस टेम्पररी माउंटिंग, आप परसिस्टेंट माउंटिंग कर सकते हो. FS टैब को एडिट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. तो आपकी चॉइस है, आप इसको परसिस्टेंट माउंट करना चाहते हो या टेम्पररीली माउंट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो. एटलीस्ट हमने परसिस्टेंट नहीं, टेम्पररी माउंटिंग करके यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा कंप्लीट किया EFS शेयर का. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट EFS शेयर, ओके, दैट वी हैड टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. अगले सेशन में हम ऐसा ही कुछ और इम्पोर्टेंट और यूजफुल चीज लेकर आएंगे. सो गाइस, आप में से किसी को कोई भी सर्विस है AWS की, आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, या कोई प्रैक्टिकल से आप देखना चाहते हो, तो लेट अस नो कमेंट्स एरिया में. यू कैन कम एंड टेल अस व्हाट डू यू वांट टू, व्हिच टॉपिक यू वांट टू कवर नेक्स्ट. तो विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टॉपिक इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू. सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा सेशन, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे देना प्लीज. So guys, this was the objective for today. Before leaving this session, I'll just clean up the board firstly. And what we'll do is we'll terminate everything that we had done. So first thing is this: ki delete this EFS elastic file share. Click delete button. It will ask you for the file share ID. Copy this and paste it over here. Okay, and this will delete the EFS share for you. And then the instances as well. दो instance हमने launch किए थे यहाँ पे. Choose this both instances and terminate them. So guys, if you are following me in this practical, remember, आपको अपने instances को, आप जो भी मेरे को follow करके create कर रहे हो, you have to delete it after the practical is completed. Okay? तो successfully share to delete हो गया, instances भी terminate हो जाएंगे. Okay? Clear? तो instances are in shutting down stage. So guys, this was the objective for today's practical. Okay? कल के practical में एक नया objective लेंगे. So guys, we'll end the session here. Thank you for watching. Good day. Goodbye.